Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start with your first chapter in second year biology, that is homeostasis. This is the 15th chapter of your book. Dear students, इस चैप्टर में हम वो हर चीज़ को डिस्कस करेंगे जो हमारे अंदर की इन्वायरमेंट को यानी हमारी बॉडीज़ की इन्वायरमेंट को बैलेंस में रखती है। अब ये बैलेंस क्या है, किन चीज़ों का बैलेंस है? डियर स्टूडेंट्स, ये हर उस चीज़ का बैलेंस है जो हमारे जिस्म के अंदर है और चूँकि एक मेंटेन्ड इन्वायरमेंट में है और उसको बैलेंस रखना पड़ता है बाहर की फ्लक्चुएशंस के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा फिनोमेना हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में जिनमें हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हार्म से बचाया जाएगा। अब मैं दो चीज़ें टर्म कर रही हूँ, दो टर्म्स कॉइन कर रही हूँ इधर, इंटरनल इन्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, कहाँ कहाँ होती हैं और इन दोनों में बैलेंस रखने का मतलब क्या है। हम ये हर उस चीज़ को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और एट द एंड ये कंक्लूड करेंगे कि होमोस्टैसिस इज़ द मेन एंड वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस which is responsible for keeping things balanced inside our body. Dear students, what happens if there is a change in our environment? Here, I have already told you about the two terms I have coined there, that is internal environment and external environment. What is the difference between the internal and external environment? The internal environment is our body's environment and external environment is our surroundings. So the fluctuations in the internal environment definitely affects our body's internal environment. So in this we will going to discuss how the external change in our environment causes an impact and changes in our body's internal environment. First of all, here I will discuss depending upon the degree of change. Depending upon the degree of change, it causes discomfort, it causes diseases and sickness, it causes damages or injury, or it may lead to the death sometimes. And secondly, we will going to discuss a significant change in the environment is harmful for an organism. Dear students, I have already told you that the fluctuations in the external environment causes the effects in our body's internal environment, which need to be balanced according to our needs and demands. And in this chapter, that is homeostasis, we are going to discuss how we can maintain our internal environment with the effect of the external environment. How we can maintain our body's environment with the effect of the fluctuations in the external environment. So here I have quoted the example, when fish is sick, change the water. What does it means? It means, beta, I will explain you with a very simple example कि अगर गर्मियाँ मौसम गर्म है तो your body needs to change your internal environment. Your bodies need to be balanced according to the fluctuations in the external environment. For example, गर्मी है, it's hot. You need to take a glass of water to keep balancing the temperature inside your body. You will going to take a glass of water, you are going to switch on the fan, you will keep balancing the body's internal environment with the external environment. These are the things which we need to change according to the fluctuations in our external environments. You know that the environment effect may be harmful for an organism.
व्हाट डज़ इट मीन द सिग्निफिकेंट चेंज इन द इन्वायरमेंट इज़ हार्मफुल फॉर एन ऑर्गेनिज्म, कि अगर कोई बाहर चेंज हो रहा है तो वो डेफिनेटली हमारी बॉडी को हार्म करेगा। अगर गर्मी है तो हमें गर्मी लगेगी और हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी बॉडी को बैलेंस करना होगा, मेंटेन करना होगा अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसी चैप्टर में होमोस्टेसिस का भी हम कह सकते हैं, होमोस्टेसिस को हम का सब टाइटल ये भी रख सकते हैं कि कीपिंग थिंग्स इन बैलेंस, कि हम किस तरह अपनी लाइफ को, अपनी बॉडीज़ की इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की फ्लक्चुएशंस या बाहर की इन्वायरमेंट की चेंजेस की वजह से होने वाले हार्म से बचा सकते हैं अपनी बॉडी को। यही हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ चेंज के डिस्कम्फर्ट, डिजीज़, डैमेज और डेथ, इसकी मैं बड़ी आसान सी एग्जांपल कोट करती हूँ यहाँ पर, कि जैसे आप बाहर जाते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वो क्या कॉज करती है, नॉइज़ पोल्यूशन। उस नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से आपकी जो यू नो दैट कि जो हमारी इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट करती है हमारे मूड को, जो उनकी चेंजेस होती हैं हमारे बिहेवियर पे अफेक्ट करती है। इसी तरह अगर ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है, उसकी वजह से आपको हेडेक होगा, आपको यू कॉज डिप्रेशन, you will be affected with the depression. Air pollution causes the lungs diseases like causes flu, कफिंग होगी, ये सब जो है ना ये डिजीज़ेज़ हैं। अगर हम इसके सब टाइटल पे गौर करें तो इस तरह बॉडी जब इन्वायरमेंट चेंज होती है तो हमारी बॉडी पे किस तरह वो इफ़ेक्ट करती है। ये मैंने सिंपल सी एग्जांपल आपको पोल्यूशन की एग्जांपल दी है, एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, ये जो पोल्यूशन है हमारी बॉडी पे किस तरह इफेक्ट करती है। तो इस चैप्टर में हमने यही डिस्कस करना है कि व्हाट हैपन्स इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन आवर एनवायरनमेंट, कि किस तरह अगर इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो हम किस तरह अपनी बॉडी को अकॉर्डिंग टू द फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वी आर गोइंग टू कीप बैलेंस inside our body. This is actually what is homeostasis. Homeostasis is, you know, that very important to keeping things in balance inside our body. This is the process we are going to discuss in this chapter. Dear students, for explaining the process of homeostasis, I have already told you that with the help of with exemplify करते हुए हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो for understanding the concept, the main concept of homeostasis, how keeping things in balance, we need to start from simple to the complex, with a simple organism, with unicellular organism, and then we're going to move towards the multicellular organisms. Here, life originated as unicellular organism in primitive sea. What is primitive sea? Primitive sea or primitive ocean was the first ocean which was born due to the condensation and many other processes. It was the first ocean, first sea in which life exists, start existing. The primitive sea was the environment from the primitive unicellular organism. जो सबसे primitive का मतलब ही होता है सबसे पहला, तो जो पहले organism, living organism थे, वो किस तरह उस primitive sea में रहते थे और किस तरह उनकी environment change होती थी according to their internal environment. हम इस चीज़ के बारे में discuss करेंगे क्योंकि हमने simple से complex की तरफ जाना है. They obtain nutrition from it and discharge waste in it. वो क्या करते थे, वहीं से उसी water से उन्होंने उसी sea में unicellular organism was surviving their life there. They obtain nutrition from that water, that sea, and also discharge their waste in it. अब क्या होता था, the vastness of the sea kept its composition almost constant. अब उस सी की जो वास्टनेस है वो उसकी कंपोजिशन को कांस्टेंट रखती थी, मींस बैलेंस रखती थी कि अगर जो चीज़ न्यूट्रिशन वो कितनी ले रहे हैं और कितनी डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब कितना वेस्ट निकाल रहे हैं, उसके लिहाज से वो कितना अपनी बॉडी को आपको पता है हर चीज़ एक मिनिमम अमाउंट या एक नॉर्मल रेंज में ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हों चाहे वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, दे नीड द normal and the balanced needs inside their bodies. न्यूट्रिशन है वो बैलेंस तरीके से वो जाती हैं और जितना वो इनटेक कर रहे हैं उसी को बैलेंस करने के दे हैव टू डिस्चार्ज दिस waste in the water. और that primitive sea
the vastness of that sea kept its composition almost constant, और फिर वो उसके लिहाज से अपनी composition को क्या करती थी, constant रखना. Now, student, unicellular organisms evolved into multicellular organisms. You know that the single fertilized cells are converted into the fertilized cells go fertilization and convert into the multicellular organisms. So some cells in the multicellular organisms were away from the primitive C. What does it means that in that particular primitive C was the existence of there are only unicellular organisms can exist in the primitive C, and some organisms were away from that primitive C. As cells could not reach the C was brought within in the form of extracellular fluid. What happens, you know that the multicellular organisms that cells couldn't reach that C, the C was brought within in the form of extracellular fluid. क्या हुआ, वो extracellular fluid में convert हो गया. अब हम इसकी हिस्ट्री की तरफ चलते हैं. होमोस्टेसिस की हिस्ट्री की तरफ हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे कि किस तरह से होमोस्टेसिस इवॉल्व हुआ, किस तरह से कौन कौन से साइंटिस्ट ने इस पर वर्क किया. नाउ मूव next slide. 60% of human body is water. You know that 60% of human body is water. 40% is intracellular fluid, that is outside the water fluid. Intracellular fluid, that is fluid inside the cells, and 20% is extracellular fluid, that is fluid outside the cell. Further divided, intracellular means inside and extracellular means outside. So human body consists of 60% of water, 40% is intracellular fluid, and 20% is extracellular fluid. Further, it is also divided into the interstitial fluid, that is of 15%, and it also consists of 5% plasma. Okay students, here we will discuss the internal environment of the body. Here we will only discuss the cells in the body that live in the same environment and how the same environment living in the same environment, how they survive there. So here the internal extracellular fluid is termed as the internal environment, is known as the internal environment of our body, and it's also known as milieu interior. Milieu interior, this term is quoted by a scientist. Here I'm going to tell you the detail in the next slide. Here in this we will discuss the same environment, the cells which are living in the same environment, how they survive there, and they keep things balanced by living in the same environment. They get the nutrition from it and discharge their waste products in it as well. So how the composition remain constant there in the same living in the same environment. Here we're going to discuss this. I have explained you this. We are discussing the internal environment, then later we will going to discuss the impact of internal environment on the external environment. We'll move towards the simple from the complex, from simple, and then we'll going to the complex one. Okay students, the term I have coined here, that milieu interior is used by us physiologist, the French physiologist Claude Bernard. The father, he is known as the father of physiologists. So he concluded that the consistency of the internal environment is necessary for the free life. He gave his idea about the this term internal environment, that the consistency of the internal environment is necessary for the free life. What does it mean? Living things must maintain an internal consistency. For the metabolic process to function normally, living things need to keep themselves stable in a temperature, moisture level, chemistry as well. So homeostasis is the ability to maintain the internal consistency. He gave this concept about the internal environment. This French physiologist who uses this term milieu interior, and his concept was that the consistency of the internal environment is necessary for the free life. कि किस तरह ये important है
कि एक कंसिस्टेंसी जो इंटरनल इन्वायरमेंट की है एक मेंटेन करने के लिए हमारे अंदर के टेम्परेचर को किस तरह ये होमोस्टेसिस की तरफ ये मूव ऑन होता गया और इसने अपना ये वाला कॉन्सेप्ट दिया। हाँ जी, इधर वॉल्टर बी कैनन था जिसने बर्नर्ड के उस कॉन्सेप्ट को द कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट इज़ नेसेसरी फॉर द फ्री लाइफ, ये उस टर्म को मेलियो एंट्रियोर जो टर्म उसने यूज़ की थी उसको उसने एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट था जिसने उसको पॉइंट किया उस टर्म को, उसको फर्स्ट टाइम नेम दिया होम्योस्टेसिस का। He described that an evolutionary development of metabolic wisdom that provides for internal consistency. अब उसने evolutionary development of metabolic wisdom जो है उसने internal consistency को term coin जो first term coin की वो कौन था? अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट था वॉल्टर बी कैनन जिसने इसको नाम दिया होम्योस्टेसिस का। Okay students, here we will going to discuss what is homeostasis. We have already discussed about the evolutionary history of this term, how it evolves and how it was given this name. So what does it means? Homeostasis means the maintenance of nearly constant condition in the internal environment. For example, our body's internal environment को balance रखने के लिए, उसको constant रखने के लिए जो टर्म यूज़ होती है मेंटेन करने के लिए वो होती है होम्योस्टेसिस। द वेरियस physiological arrangement which serve to restore the normal state once it has been disturbed are known as homeostasis mechanism। अब homeostatic mechanism क्या है कि जो हमारी normal state को disturb कर दे with reference to the external environment, किसी भी वेरियस फिजियोलॉजिकल अरेंजमेंट विच सर्व टू रिस्टोर द नॉर्मल स्टेज वंस इट हैज़ बीन डिस्टर्ब्ड as known as homeostatic mechanism। homeostatic mechanism क्या है? हमारी अंदर की environment को maintain करने के लिए, constant रखने के लिए, balance रखने के लिए जो mechanism use होता है वो क्या कहलाता है? homeostatic mechanism, जो कि हमारी नॉर्मल स्टेट को डिस्टर्ब कर रहा होता है। उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वो जो टर्म हम यूज़ कर रहे हैं इधर, वो जो प्रोसेस है, जो वो मैकेनिज़्म है, वो क्या कहलाता है? होम्योस्टेसिस कहलाता है। So here we have discussed, we have come to the main point of our chapter which we are going to discuss. We have discussed its evolutionary history, we have discussed how it evolves, and now we will came to know that homeostasis is very important and one of the important process in our body which is responsible for keeping things balanced inside our body, which is disturbed and which is affected by the fluctuations occurring in our external environment. Dear students, here we will discuss what needs to be maintained constant in the internal environment। हमें अपनी बॉडीज़ के environment में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको constant या maintain रखना होता है कि किस बॉडीज़ के environment में होमोस्टेसिस का प्रोसेस चल रहा है और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो जिनको मेंटेन करना बॉडी में बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कंसंट्रेशन, हाउ वी कैन मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। We have to maintain the concentration of oxygen and carbon dioxide within our body, pH of internal environment, the concentration, how to maintain the concentration of the nutrients and the waste products, and how we will going to maintain the concentration of the salts and other electrolytes in our body, and how the volume and the pressure of extracellular fluid we are going to maintain, how we can maintain the constant volume and the pressure of extracellular fluid inside our body. It's enough for today. We're going to discuss further in our next lecture. Thanks for watching. Allah Hafiz. Skyhawks Academy provide golden opportunity to join Air Force, Navy and Army. It provides special guidelines of ISSB, induction coaching, admission preparation, entry tests and tuition for matric, FSC and O-level, A-level.